So hello everyone, I am Pratyush Mehra and today I'll be talking about state management in Flutter. So whenever you start with an app, the first thing you do is make its UI. In making the UI, you have data that may be static or dynamic. For example, if you have a hello text that will just show hello, it will be static data, like that it won't change in the overtime of the app. And you have a dynamic data like a counter which will increase on pressing some button, or maybe a switch that will toggle on or off. फॉर ईजर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल. आप एक रूम में घुसते हो जैसे ही, तो रूम में एक लाइट स्विच होता है. लाइट स्विच का दो स्टेट होता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा. अगर वो ऑन है तो बल्ब ग्लो कर रहा है और रूम में लाइट है, और अगर वो ऑफ है तो बल्ब ऑफ है और ग्लो नहीं कर रहा है, तो रूम में लाइट भी नहीं है. तो if it was in Flutter, it should have been managed with state management. So what is state management? State management आपका डायनेमिक डेटा को कैसे मैनेज करना है, यूआई को कैसे अपडेट करना है उस डेटा के अकॉर्डिंग, उसको मैनेज करता है. So what is UI made up of? UI is made up of widgets. Widgets are like the building blocks, like you have seen Lego. Lego में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और उनसे आप एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बना सकते हैं. मतलब नॉट अ रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर बट यू नो व्हाट आई मीन. तो आप उससे आर्किटेक्चर बना सकते हैं. वैसे ही विजेट्स होते हैं. विजेट्स आपके छोटे से बड़े हर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है. लेट्स से फॉर यू हैव अ ऐप, और yeah, this is your app, let's say, and you have widgets are like the building blocks I said. So widgets में भी एक widget tree होता है. widget tree is like the जिस तरह से डेटा और superiority का ऑर्डर होता है और जिस तरह डेटा फ्लो करने वाला है. सबसे टॉप पे होता है आपका मटेरियल ऐप. उसके बाद आपका आता है स्कैफोल्ड. Wait, let's look at the code first. This is the default Flutter code. If you just in the terminal write Flutter create and a file name, it will create a Flutter code for you. This will be the default code, and let me remove the dot, star, and dollar, and I will replace everything with this double space. And I have selected these. I'll just swap it. Yeah, everything is gone, and I'll just refactor it. Now you have now a cleaner code. So I have already ran it in my online ework. This is the output of the Flutter code. This is already a counter that we will see how it works. So this is the Flutter widget, and this is the top layer, like the material app I said here. Material app. Then you have a scaffold, like this is the material app. It has a title given Flutter demo. It is shown here, Flutter demo homepage, and no, this is the title. This is the title of a material app, which on hover, if it was a ईवर ई जो डिवाइस होता है, उसमें अगर आप इसके ऊपर होवर करते तो आपको ये इसका फ्लटर डेमो लिख के आता, इस विजेट का नाम. तो मटेरियल आपका आपका नाम है वो. दिस द थीम डेटा, दिस द होम. होम में आप टाइटल पास कर रहे हैं. यहाँ पे आप टाइटल को फेच कर रहे हैं. उसके बाद दिस इज द फंक्शन, एक वेरिएबल है. इसके बाद आपका आता है सेकेंड विजेट ट्री में स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड के अंदर आपके कंपोनेंट्स आते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ. स्कैफोल्ड ये है. इसके अंदर आपका आता है ऐप बार. दिस इज द ऐप बार. दिस इज द body. For the current code you have a board, like let me tell. This is the app bar. This portion above one, above the, this is the body. This is the body, and this is the bottom nav bar. We will talk about bottom nav bar later. In this UI we don't have a bottom bar nav bar. It's to switch between pages. So this is the body. Body has a center first, center. Then you have a column. Then you have column has two texts, and this, they are on the same level. So yeah, so basically your UI looks like something this. This is your app bar. This is your body. The center will bring everything to the center, and the column will arrange them vertically. There are two texts, so it will be displayed like here and here. This is the vertical sign. So let's see the code here. You have this app bar. This is bottom bar is not there. This is the center. It is the first text and the second text as I shown here. This is this, and zero is this one. Then you will say why it is outside. So because it's not in the center field. This is the center field. सेंटर फील्ड के बाहर है फ्लोटिंग एक्शन बटन. दिस इज कॉल्ड द फ्लोटिंग एक्शन बटन. फ्लोटिंग एक्शन बटन एक बटन होता है जो आपका डिफॉल्ट पोजीशन की बॉटम राइट पे होती है.
So this is your on press. It is calling the increment counter function. Increment counter is using set state. So जैसे कि मैंने बताया set state is Flutter में आपके पास state management tools होते हैं. Set state is the most basic, like it is default as you see default में मिलता है. Set state आपको क्या करता है, कोई भी widget को बताता है कि change आया है आपके widget में, उसको rebuild करो. So whenever like एक widget है, this is the widget. अगर widget के अंदर 3 4 5 चीजें हैं और आपको इस पूरे को चेंज करना है, इसके अंदर के कंपोनेंट को चेंज करना है, पर अगर आपने इस विजेट को सेट स्टेट बता दिया तो सेट स्टेट के बाद ये पूरे विजेट को बिल्ड करेगा, और इसके अंदर जितने विजेट्स होंगे वो फर्जी के बिल्ड होंगे और उससे आपकी स्पीड कम होगी ऐप की. तो उसको उससे बचने के लिए हमारे पास और भी स्टेट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं. लाइक वी विल move to the PPT. This is the widget. This is the why state management is needed. This is the popular. This is the provider. Provider is the first and the basic and most foremost every Flutter dev learns in the Flutter journey, in the learning of state management. It is very easy. No much like उतना boilerplate भी नहीं होता है और small to medium apps के लिए होता है. ये इसका एक फ्लॉ है. बड़े ऐप्स के लिए इसमें दिक्कत ये होती है कि यूआई और लॉजिक लेयर दोनों एक ही साथ होते हैं, तो मैनेज करना और टेस्ट करने में दिक्कत आती है. वहीं पे रिवर पॉड इज फॉर बिगर एप्स एंड इट इज अ स्टेप अबव प्रोवाइडर. वहाँ पे आपका लॉजिक और यूआई कंपोनेंट सेपरेट रहते हैं, तो उससे आपको कोड में दिक्कत नहीं आती है टेस्टिंग के टाइम पे. Then you have a GetX. GetX is very fast and efficient, but again it is for small apps, not for it can't handle big apps because इसका भी लॉजिक और वो साथ ही में रहता है. पर ये फास्ट डिप्लॉयमेंट और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड करता है, ये नेविगेशन प्रोवाइड करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करता है और स्टेट मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है. थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ने के लिए, पर व्हेन यू लर्न इट इट इज़ वेरी इजी एंड हैंडफुल. बट उसके लिए आपको इसमें मास्टरी होनी चाहिए. एंड मास्टरी की बात में ब्लॉक इज लाइक द बेस्ट स्टेट मैनेजमेंट यू कैन फाइंड इन द मार्केट. द बिग कंपनीज जो भी हैं फ्लटर पे आप बनाती हैं वो ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट यूज करती हैं, क्योंकि ब्लॉक आपको दो पोर्शन देता है. लाइक यू हैव ब्लॉक, दिस इज एग्जांपल block, then you have a state, you have event and you have block. इवेंट में आपका इवेंट ट्रिगर होता है जो कि ब्लॉक के पास जाता है और ब्लॉक बताता है स्टेट को कि अपनी स्टेट चेंज कर लो अकॉर्डिंगली, ये जो इवेंट ट्रिगर हुआ है उसके हिसाब से. तो इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इट आल्सो कीप्स द यूआई एंड लॉजिक लेयर डिफरेंट. और वो इतना डिफरेंट रखता है कि यू कैन इजीली टेस्ट द लॉजिक विदाउट टचिंग द यूआई. सो व्हेन इन बिग फर्म्स जब मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं तो यूआई कैन बी सेपरेटेड एंड द लॉजिक कैन बी सेपरेटेड. तो अपना अपना सब लोग काम कर सकते हैं. इट डजेंट रिक्वायर कि किसी को मदद चाहिए हो. तो दिस आर ऑल अदर स्टेट मैनेजमेंट लाइक प्रोवाइडर, गेटएक्स आई सेड. This is something stateful widgets. Oh, I left the widgets. Widgets are of two types, stateful and stateless. Stateless widgets are the widgets that don't change. Stateful widgets are the widgets that do change over time. वही stateful widgets को मैनेज करते हैं और stateful widgets मैनेज होती हैं स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू. This is all your state management here. Yeah, so that's all about it. And let's see the code now. It has set state here. If you just remove this set state and rebuild the app, it is rebuilt, and now you just press this increment and wait, it is not rebuilt correctly. I don't have an error, right? No, I don't. Yeah, the increment button doesn't work because sets, क्योंकि जब आपका increment counter कॉल हो रहा है ऑन प्रेस पे तो बता ही नहीं रहा है यूआई को कि कुछ चेंज हुआ है, तो यूआई का काउंटर बढ़ ही नहीं रहा है. काउंटर बढ़ रहा है पर वो यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर एंड से hi, let's say. So you rebuilt it, you go to the debug console and you press it. It says hi 4 times. If I press more, it shows more. So this is what set state do to it. And now let's convert this set state into provider code. So I have the already installed the provider dependency. This can be imported from here. Pub dev you go and you search provider. It is a ऑफिशियल फ्लटर डॉक्स. तो यहाँ पे आपको प्रोवाइडर का वो मिल जाएगा, इसको कॉपी करना है और डिपेंडेंसीज में यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है. इससे आपके कोड में प्रोवाइडर इंपोर्ट हो जाएगा. प्रोवाइडर इंपोर्ट करने के बाद यू विल मेक अ क्लास, वी विल मेक अ क्लास काउंटर
provider with change notifier, because change जब counter provider call होगा तो notify करेगा change को. और you have a int underscore count equals to 0, and you have int get counter. You will get the value of counter variable here, and you will just make a function that we had earlier. This one will cut it, and we will just use it here, and we will remove the set state. Okay, fine. Then, oh, sorry, then you will no sorry notify listeners. We will notify listeners जहाँ पे भी ये listen हो रहा है कि चेंज हो चुका है, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो अपने कोड को. उसके बाद we will move to, yeah, we will have to wrap it in change providers. We will go here, we will refactor it. We will refactor it with block listener for now, but we will change notif change notify provider, and we will have uh, did I wrap it with something wrong? Yeah, I guess. Wait, let me see. Wrap it with block provider, and we will have change notify provider. Our context will be just an empty. We will call change notify. Sorry, counter provider. Yeah, this one. So we have this. We have the provider package imported here. So we will see increment counter is here in the UI. Now we will update it with the help of this counter is not needed anymore. In the, yeah, this counter doesn't exist. So we will have here, we will go into provider. This is the syntax, provider dot off. We will call here counter provider, the class we made above. Then we will pass some context, context, and we will ask for counter that we had earlier. More, we can't use on press here. We will use again provider dot of counter provider, and you will pass context and dot. What was the name of the function earlier? It was increment counter. We will make it public. It is private currently. Underscore make a way something private, and we will have, what was the name again? Increment counter. Yeah, increment counter. So now we have implemented provider. No much boilerplate. Everything easy. We will see here. Yeah, it works. It works very fine. Everything is working with provider. We are not using set state now. We are using provider. So this is the syntax of the provider. It's very simple and easy. And I hope everything is clear how state management works and how provider works. Thank you.